तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेस लेक्चर। आज हम दूसरा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज आवर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज हम देखेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है और क्या डिफरेंस है आपके हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर harmonic oscillator or how we can relate the rigid diatomic molecules to what we can say a harmonic oscillator. So वहां पे हमने देखा कि कैसे आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल बिल्कुल एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे थे और कैसे आपका हुक्स लॉ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ओबे हो रहे थे। हाउएवर इन एक्चुअल में केस में क्या होता था कि जैसे ही हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा, the selection rules was delta v is equal to plus minus 1। तो ये हमारे पास क्या था, सिलेक्शन रूल थे। और जब हमने इस सिलेक्शन रूल को अप्लाई किया हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो हमारा जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप था, द गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज सेम, रिमेन सेम एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा ऑसिलेशन बार। नाउ हमारा एनर्जी लेवल जो है, हमारा ये पैराबोलिक कर्व था और पैराबोलिक कर्व में हमने एनर्जी लेवल्स देखे कि ये जो एनर्जी लेवल्स है वो इक्वली स्पेस है। ठीक है, इक्वली स्पेस मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स आर सेम। सो एनी distance between any two energy level is remains same and it is equal to omega oscillation bar. And if the energy levels are same, the gaps are same, then in the spectrum also we got one single line at frequency of around omega oscillation bar. So ये था हमारा केस इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की केस में। हाउएवर जब आप एक्चुअल आईआर स्पेक्ट्रम को देखते हैं, if you observe an actual spectrum, for example the spectrum of HCl, you can observe a series of line। आपको एक पीक नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे पीक्स मिलेंगे इस तरह डिफरेंट इंटेंसिटी के। तो why there are so many peaks of different intensity? If we have said in case of harmonic oscillator that the energy, the gap between any energy levels are same, due to which we should get a single peak, but instead of a single peak in the actual spectrum we observe a series of peak। हमारे पास बहुत सारे इस तरह peaks देखने को मिलते हैं। ठीक है, and the series of peaks with decreasing intensity। तो इस तरह आपका slowly decreasing intensity decrease होते हुए आपको बहुत सारे peak मिलेंगे। Then what does it mean? It means that a real molecule do not obey exactly हुक्स लॉ। इसका मतलब क्या है कि आपका रियल मॉलिक्यूल बिल्कुल भी हुक्स लॉ को एग्जैक्टली ओबे नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट पीक्स या डिफरेंट सीरीज ऑफ पीक्स विद डिफरेंट इंटेंसिटी। अगर आपके हुक्स लॉ को फॉलो करते तो आपके पास एक ही पीक आना चाहिए, लेकिन रियल में आपके पास एक पीक नहीं आते हैं, आपके पास बहुत सारे पीक्स होंगे विद different intensity। That's why the real molecules do not obey Hooke's law, which means that the force are not directly proportional to the change in the displacement। It means हमने कहा था कि आप एक अगर मॉलिक्यूल पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द डिस्टेंस वेदर द मॉलिक्यूल इज स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। तो ये आपका हुक्स लॉ था। लेकिन
रियल मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, रिजिड है। रिजिड मीन्स देयर इज वेरी अदर नो चेंज और वेरी स्मॉल चेंज इन द बॉन्ड लेंथ, change in the bond length taking place. Now if you consider a real molecule, there is there there can be change happens when you stretch or compress the molecule, due to which the force is not directly proportional to the change in displacement, and the real molecules, any real molecules cannot obey Hooke's law. So बिल्कुल जिस तरह हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पहले कंसीडर किया था रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल जहां पे बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है, देन हमने नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा कि कैसे जब आपका बॉन्ड को हम इलास्टिक, आपके पास इलास्टिसिटी कंसीडर करते हैं, कैसे आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पे भी पहले हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया, जहां पे आपका हुक्स लॉ एकदम से फॉलो हो रहे थे, लेकिन कुछ एक्चुअल जो रियल मॉलिक्यूल्स है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये तो होगा क्या, अब आप क्या होगा, आप इस बॉन्ड को आप इलास्टिक कंसीडर कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को इफ यू आर एदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग दिस बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग लेता हूँ, तो आपने इस बॉन्ड को इतना स्ट्रेच किया, नाउ आप इसको थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे, आगे आप और स्ट्रेच करेंगे, तो ऐसे जैसे जैसे आप बॉन्ड को स्ट्रेच करते जाएंगे, देयर विल बी ए पॉइंट एट विच दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। अब एक पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे आपका ये जो बॉन्ड है, जहां पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बैलेंस फोर्स था, द अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड एट ए पॉइंट। नाउ इफ यू फर्दर स्ट्रेच दिस बॉन्ड, देयर विल बी ए पॉइंट एट विच दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। जैसे ही आपका ये ब्रेक होंगे, आपका दो एटम्स अलग से दो एटम्स बन जाएंगे, और यही ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज द फंडामेंटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तभी आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो रियल मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बिहेव्स इन दिस वे कि आप एक लिमिट तक उस बॉन्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट we can take real molecules as harmonic oscillator up to a certain point। यहां तक हम इसको इलास्टिक कंसीडर कर सकते हैं। इट मींस यहां तक आप इस बॉन्ड को इधर स्ट्रेच कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं, बट we can say if the bond stretching is greater than 10%, अगर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के आप 10% से ज्यादा उस बॉन्ड को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, then the behavior will be much complicated। आपका बिहेवियर जो होगा वो कॉम्प्लिकेट बन जाएंगे, आपका हुक्स लॉ then it will not obey हुक्स लॉ। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन की जब आपका बॉन्ड ब्रेक होंगे, एटम्स अलग होंगे, तो आपका केमिकल रिएक्शन होंगे। सो इन रियल केसेस एनी मॉलिक्यूल्स which if you stretch it more than 10% of its actual bond length, the molecule will break down। So it will not obey Hooke's law and it will not form this parabola। आपका ये जो पैराबोला हमने बनाया है, ये पैराबोला यहाँ पे फॉलो अप नहीं होंगे। तो होगा क्या फॉलो अप, अगर आपका ये पैराबोलिक कर्व फॉलो नहीं होंगे तो क्या होंगे वो, अगर आप इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन your energy and internuclear distance, then you will get a distorted parabola। ये आपका internuclear distance axis इसको हम कंसीडर करेंगे, और ये आपका एनर्जी एक्सेस। तो इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको ऐसा वाला पैराबोलिक ग्राफ मिलते थे, ठीक है, इसको हम डैश डैश लाइन से बनाएंगे। So this is the parabolic curve which we get या obtain for a simple harmonic oscillator। तो ये simple harmonic oscillator के लिए आपको ऐसा एक कर्व मिला था, लेकिन एक्चुअल केस में क्या होता है, आपका पैराबोलिक कर्व देख रहे कि ये ब्लैक वाला आपका पैराबोलिक कर्व है, तो आपका मॉलिक्यूल इधर कंप्रेस होंगे और स्ट्रेच होंगे, तो आपका ऐसा पैराबोलिक कर्व बनेंगे। लेकिन
एट ए पॉइंट, आपका एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से आपका मॉलिक्यूल क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल फर्दर स्ट्रेच करने से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एनर्जी इंक्रीज नहीं होंगे। एटम्स सेपरेट होके अलग अलग एटम्स में डिवाइड होंगे, एंड दिस गैप इज नोन एज और यूजुअली डिजिग्नेटेड एज DEQ। DEQ यूजुअली इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मींस द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द सेपरेशन ऑफ द टू एटम्स। आपके मॉलिक्यूल में जो एटम्स थे वो ब्रेक हो गया, और इतना एनर्जी देने पे आपका एटम्स क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, मींस योर मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग। सो दिस इज द एक्चुअली कर्व व्हिच ए रियल मॉलिक्यूल्स ओबे। आपका रियल मॉलिक्यूल ऐसे कर्व को ओबे करते हैं, और इसको हम कहते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इस एक्चुअली कर्व को हम कहते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी curve. So the actual molecule, a real molecule behaves in this way, that at a particular point you can either stretch or compress a bond, but after a certain time your bonds will break down. आपका break down हो जाएंगे, and and I can say the atoms will separate out. So thus a harmonic parabola does not, अगर ये आपका ग्रीन वाला हार्मोनिक पैराबोला है तो ये आपकी मॉलिक्यूल को ब्रेक होने नहीं दे रहा है, does not allow the bond to dissociate or the atoms to dissociate, which can say that harmonic approximation fails to explain the real molecule. अब आपका रियल मॉलिक्यूल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो आपकी इस पैराबोला में नहीं है। ठीक है, so we can say that vibration motion for large displacement is in harmonic. If the displacement is large, then we can say it is enharmonic, which further means that the restoring force may not be proportional to the displacement. आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और आप ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखा था। Now here we have to introduce a new realistic potential to explain the behavior of I can say the behavior of a real molecule, and a purely empirical expression which fits this curve to a good approximation was derived by P.M. Morse and is called Morse function, and the graph is known as Morse potential energy curve. The expression is like this. आपका expression ऐसा कुछ था Morse function का, E is equal to DEQ 1 minus exponential A R equilibrium minus R whole square. So this is the expression given by P.M. Morse, which actually fits to a good approximation to explain the behavior of a real molecule. आपका actual जो real molecule को Morse potential energy को as well as Morse function आपका explain करते हैं। ठीक है, तो this is how your Morse potential curve looks like. तो ये आपका Morse potential जो है, जो कि एक्चुअल रियल मॉलिक्यूल फॉलो करता है, ऐसा कुछ होता है जहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आपका बॉन्ड ब्रेक होंगे, एंड दिस इज इक्वल टू योर डी इक्विलिब्रियम और DO या डिसोसिएशन एनर्जी, या आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं टू पोटेंशियल, एंड दिस
will give you the R equilibrium. This much distance will give you the R equilibrium, and here your mu is equal to 0. That is the zero potential या zero point energy. ठीक है. So अब यहाँ पे आप देखेंगे you have a dq, जिससे हमने कहा it is dissociation energy, जहां पे आपका मॉलिक्यूल क्या होंगे, ब्रेक होंगे. यहाँ पे आपके पास एक और टर्म है a है, a is the constant, a is the constant, और यहाँ पे आपका r है और r e q है. r आपका है आपका bond length at any point, whether you are stretching or compressing, and REQ is the equilibrium bond length. REQ है आपका equilibrium bond length. So this is the equation which actually explains the behavior of a real molecule, and this is known as Morse function, and the curve is known as Morse potential energy curve. So now we can consider three cases here. Case number one is at equilibrium position when your RE is equal to या REQ is equal to R. अब हम इसमें 2-3 केस देखेंगे कि अगर आपका डिफरेंट केसेस में आपके इस फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है या पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इसको हम फॉर एग्जांपल इसको हम ई से नहीं वी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि इसको हम पोटेंशियल की फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सके. ई से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो अगर आपके पास पहला केस है व्हेन योर आर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आर, आपका मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्विलिब्रियम के क्या है, बराबर है. इट मींस देयर इज no other stretching or compressing occurs. So what will be the above equation? Then the above equation will be like VR is equal to DE 1 minus exponential. ठीक है, जब R E Q and R बराबर होंगे then R E Q और R this will become 0. ये आपका क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे. And square. Now we know that E naught is equal to 1. ये 1 के बराबर है. The equation will become 1 and this will become equal to 1. 1 minus 1 is 0. So the overall equation will be 0 into D is 0. So when your R is equal to R equilibrium, then the potential is equal to 0. So this is the first case we can consider from our Morse function. And the case number second is, so here we can say that the potential becomes 0 and it is minimum. So when there is no disturbance in the molecule, अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये अपनी इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस पे है और इसमें आप कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं करने का मतलब है आप इसको स्ट्रेच भी नहीं कर रहे हैं, कंप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, then the potential becomes 0. So the overall potential, the energy becomes 0 and it is minimum. So आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो सबसे जो बिलो ये जो पैराबोला के सबसे लोवेस्ट स्टीपर पार्ट में ये क्या करेंगे, बैठे. ठीक है, इसका मतलब ये है. Now केस नंबर सेकंड इज इफ वी कंसीडर दैट, अगर आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं R is equal to infinite. R is equal to infinite means if you stretch the bond and stretch the bond and stretch the bond, at a point will come where your molecules will dissociate. इतना आप इसको स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 एटम्स अलग होंगे. जहां पे your R is infinite, तो क्या होगा, the potential equation become dE into 1 minus exponential of R minus exponential of, ये था हमारे पास R equilibrium minus R. अब आपका R क्या है, इनफाइनाइट है, R बहुत बड़ा है R equilibrium से, then we can ignore this R equilibrium and the equation will be equal to minus this infinite. So this will be the equation. Now we know that E raised power infinite is equal to 0. Then this equation will become dE 1 minus 0. Then 1 minus 0 is 1, dE into 1 is dE. So we have another case. If the
bond length, yeah, if you stretch the bond length to an amount where the two atoms get dissociate, then what will be the potential here is that the VR is equal to dE. That time the potential is equal to the dissociation energy. So here, when the R is infinite, the potential is equal to dissociation energy from the equilibrium position. So I can say in this case, the potential is equal to dissociation energy. Dissociation energy. So this is another case. Now let's consider case number 3. Case number 3 is if your R is very less than R equilibrium. It means if you are compressing the bond, then at that time the R is very less than R equilibrium. So if this is the R equilibrium, when will R become less than R equilibrium? If the two atoms comes very close to each other, then what will happen to the potential is VR is equal to dE 1 minus exponential. Then in that case, we can ignore this R and it will become raised for R equilibrium whole square. So we can say in this case, the potential, that is potential increase exponentially, which is an improvement or the harmonic oscillator. So here we can say when this is the case, the potential, that is the energy, increases exponentially. Accordingly, these are equilibrium, which is an improvement over the harmonic oscillator. So in case of harmonic oscillator, we do not have such kind of equation. So to explain a real molecule, if your R equilibrium is very much greater than R, then the overall energy, that potential will increase exponentially. So we can say the Morse potential has the property we are looking for is it does have a dissociation energy at R is equal to R equilibrium. So here we have seen that in case of our Morse potential energy curve, we have a dissociation energy which actually explains why these parabola get distorted. It means the dissociation energy will tell us that at this particular point, your molecule will break down into separate atoms. And we require this to explain the behavior of real molecule, why real molecules behave if you stretch or compress a bond. And here we have another parameter A. हमारे पास यहाँ पे एक और पैरामीटर है A. ये क्या करता है, which is also a fitting parameter. इसको हम A को क्या कह सकते हैं? This A can also be called as fitting parameters. Why we call it fitting parameters? Because it changed from molecules to molecules. The value of A changes from molecule to molecule. ये हर एक molecule का अलग-अलग value होंगे. So we can say as A gets bigger and जैसे ही आपका A का value क्या होगा, increase होते जाएंगे, the potential gets steeper. आपका potential जो है यहाँ steep बनते जाएंगे. Steep बनने का मतलब है कि आपका molecule जो है strong होंगे. The force constant of the molecule is very strong. So there is no significant theory which underpins what it should be. It's just an empirical value obtained from observation. So another important aspect here is that the DEQ, that is the dissociation energy. So this dissociation energy is not easy to calculate. ये आप easily calculate नहीं कर सकते हैं dissociation energy.
Why dissociation? Why we can't easily calculate the dissociation energy? As we know that the dissociation energy is the distance from this R is equal to 0, yeah, 0, E is equal to 0 to at that particular place where your molecule is breaking down into particular atoms, then we have said that this much gap is equal to dq. But still आपका dq आप easily यहाँ पे calculate नहीं कर सकते हैं. Then why? The question is why? Why we can't easily calculate this DEQ? The DEQ is that because of this case, we cannot easily calculate DEQ from this curve, because we know that in case of vibrational energy, in last video we have said that at V is equal to 0, we have some value of energy which is given by half of h mu. So we can say we have said that the molecules are never at rest. हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि आपका मॉलिक्यूल कभी भी रेस्टिंग स्टेट में नहीं होते हैं. The molecules always vibrate with some energy. That energy is equal to half of h mu, or I can say the 0 point energy. That's also we have said that 0 point energy, or it is equal to, in last lecture we have write it is omega oscillation bar. So this is our 0 point energy. This is our 0 point energy. So what this 0 point energy tells that the molecule will never be at rest. जब आपका molecule rest पे नहीं होंगे तो आपका molecule बिल्कुल भी यहाँ कोई molecule exist ही नहीं करेंगे. The molecule will be somewhat here, somewhat little bit higher from your base. आपकी base से थोड़ा above रहेंगे. So that's why we cannot directly calculate the dissociation energy from this graph, because the molecule will never be in at the bottom of the well. It will be somewhat little bit higher from the bottom of the well. That's why we cannot easily calculate the dissociation energy from this graph. So this is very important point you should keep in mind. Now this is what our actually enharmonic oscillator is, and why these enharmonic oscillators is, and why your real molecules obey these enharmonic oscillators. Now let's come to our energy equation. Then energy equation. Then now what will be the energy equation for an enharmonic oscillator? For harmonic oscillator, we have calculated the energy equation, which is equal to mu plus half omega oscillation bar. Then क्या आपका वही energy equation यहाँ पे भी होंगे? So energy equation को calculate करने के लिए we have to solve the Schrodinger equation. Now if you solve the Morse function, if you use, so I can say, if you use Morse function in Schrodinger equation, instead of what we have used it for our simple harmonic oscillator is k x square, half of k s square. That is the potential for a simple harmonic oscillator. And if you solve this equation for a harmonic oscillator, you have an energy equation which is mu plus half omega oscillation. And instead of this, if you solve Morse function for an enharmonic oscillator, then the solution reveals that the vibrational energy or of enharmonic oscillators are also quantized, and you will get a solution. So the solution of your Schrodinger equation is the EV is equal to mu plus 1 by 2 omega E bar minus mu plus 1 by 2 whole square omega E XE centimeter inverse. So this is the equation for an enharmonic oscillator. तो ये आपका enharmonic oscillator की एनर्जी का इक्वेशन आपको निकल आएंगे जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे by using Morse function, which is VR is equal to D
Morse function हमारे पास क्या है, DEQ, that is the dissociation energy 1 minus exponential of R equilibrium minus R whole square। जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन में इस मोर्स फंक्शन को पुट करके सॉल्व करेंगे, आपको एक इक्वेशन निकल आएंगे, दैट विल द एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हिच इज EV इज इक्वल टू V mu plus 1 by 2 omega E bar minus mu plus 1 by 2 whole square omega E XE। Now here we got a new term XE। यहाँ पे हमारे पास एक नया टर्म आ गया XE। इसको हम क्या कहेंगे, that is your enharmonicity constant, enharmonicity constant, and this is a unitless quantity। Another term here is omega E bar, that is your oscillation frequency, and it's also in centimeter inverse term that we have omega oscillation bar for omega, this oscillation frequency in case of our harmonic oscillator. In case of enharmonic oscillator, the oscillation frequency is designated by omega E bar। So what we are observing here is that this term mu plus half of omega E, this is very similar to our simple harmonic oscillator। simple harmonic oscillator के लिए हमारे पास यही equation आया था। For enharmonic oscillator an additional term is obtained, that is this from the Morse potential curve। और ये जो term हमारा कहाँ से आया है, Morse potential curve। तो हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हो रहा है which is mu plus 1 by 2 whole square omega E XE। XE को हमने कहा enharmonicity constant। Thus यहाँ पे अब आपको क्या होगा, ये वैल्यूज तो आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी आ रहे हैं, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला टर्म आपके पास ऐड हो रहा है, और ये वाला जो सेकंड टर्म है, the second term is very important when the value of V is very high। So a lower value of V, जब आपका V का वैल्यू बहुत कम होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, the value is not that much of important because this is a very small value। And the second term is the value of this XE। The value of this XE is very small। ये हमारे पास इसका वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है एंड पॉजिटिव, और ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है एंड इट इज अराउंड 0.01। ऑलमोस्ट द वैल्यू ऑफ दिस XE इज ऑलमोस्ट 0.01। सो ये आप याद रखेंगे कि XE का वैल्यू बहुत छोटा है। अगर आपको एग्जाम में दे रखे होंगे तब भी ठीक है, नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 0.01। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। इट मीन्स आपका ये वाला टर्म उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे जब आपका V का वैल्यू बहुत छोटे होंगे, लेकिन जैसे जैसे V का वैल्यू बढ़ेंगे इस वाले टर्म का इंपॉर्टेंस भी बढ़ेंगे। सो वी कैन से thus for very large value of V where the harmonic oscillator does not work well, the second term becomes more important and the value of this second term become larger as compared to the first term because of the V plus 1 by 2 square। Because here we can say in the first term we have only V plus 1 by 2 and in the second term V plus 1 by 2 square। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू जो है इसके डबल बढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसका 1 होगा इसका दुगना हो जाएंगे ड्यू टू दिस स्क्वायर फैक्टर। सो वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर डिपेंडेंस रादर देन दिस सिंगल V plus 1 by 2 as we move towards higher value of V, the second terms become more and more important। So here we have this WEXE and it is a very small term, ये आपकी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। So we can say the XE is a perturbation we are applying to harmonic function to tackle into the account of the enharmonicity। तो एनहार्मोनिसिटी को हम इसमें इम्पार्ट करने के लिए हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पे हम एक नया टर्म XE इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमें हमारे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स को क्या करेंगे, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो ये आपका एक एनर्जी का इक्वेशन था। सो
if we rewrite this equation, अगर इस equation को हम दोबारा लिखते हैं और if we take common here is EV is equal to, अगर हम this if we take this as common, then I can rewrite this equation as mu plus 1 by 2 omega E bar. तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास 1 बचेंगे, माइनस इस सेट स्क्वायर है तो हमारे पास फिर से म्यू प्लस 1 by 2 बचेंगे, ओमेगा इससे कॉमन निकाला है और ये हमारे पास xe बचेंगे. So I can rewrite this equation as E, where I have taken this mu plus 1 by 2 omega is common. ब्रैकेट में मेरे पास बचता है 1 minus mu plus 1 by 2 xe. So now if you compare this equation, okay, so we have written this equation in another form. Now, if you observe this equation, what we are observing from this equation is that this part is very similar to our simple harmonic oscillator. और ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी की तरह आपको दिख रहा है. और द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आता है, दिस विल बी इक्वल टू म्यू प्लस 1 by 2 ओमेगा ऑसिलेशन बार. सो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी का इक्वेशन है. नाउ अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, व्हाट वी विल गेट हियर इज दैट these two term is very equal. ये दोनों टर्म आपका क्या है, बिल्कुल इक्वल है. म्यू this is mu plus 1 and mu plus 1. ठीक है. So what we can see here is that we inferred that an harmonic oscillator behaves like harmonic oscillator, but the equilibrium frequency decreases steadily by increasing V. So हमारा हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का है बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन हमारा जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होंगे ड्यू टू दिस टर्म V plus 1 by 2 xe. So जितना V बढ़ेंगे उतना आपके एनहार ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होंगे. So we can write here that ये दोनों अगर आप इक्वल हैं, so we can write here is omega oscillation bar is equal to omega E bar 1 minus V plus 1 by 2 xe. So these two terms will cancel each other and this omega oscillation will be equal to omega E 1 minus mu plus 1 by 2 xe. So from here we can say that the oscillation frequency of enharmonicity and harmonicity behaves like a same, but the oscillation frequency of this enharmonic oscillator decreases steadily with increasing the value of V. तो जितना आपका V का वैल्यू बढ़ेंगे, आपका ये क्या होगा, इस वाले टर्म की वजह से एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. Now further, now let's consider a hypothetical energy state. Let's consider a hypothetical energy state by putting V is equal to minus 1 by 2. अब इस इक्वेशन में हम अपना एक हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट हम कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे आपका म्यू का जो वैल्यू है हम माइनस 1 by 2 पुट करेंगे. तो क्या होगा, जैसे ही आप इस इक्वेशन में माइनस 1 by 2 पुट करेंगे, व्हाट विल वी गेट इज ओमेगा ऑसिलेशन इज इक्वल टू ओमेगा ई बार एंड 1 माइनस म्यू की जगह हम माइनस 1 by 2 अगर पुट करेंगे प्लस 1 by 2 xe. So what we will get here is this minus 1 by 2 and minus 1 by 2. This will become 0 and 0 into x is 0. This will become omega E bar 1 and which will be equal to omega E bar. So your omega oscillation frequency is become equal to your oscillation frequency of your enharmonic oscillator. So here we can say when your omega oscillation bars become equal to omega E bar, the molecule will be 8
इक्विलिब्रियम, आपका मॉलिक्यूल इस स्टेज पे है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे है एट जीरो vibrational energy. So when these conditions become fulfilled, where omega oscillation bar and omega e bar, this oscillation frequency of simple harmonic oscillator and oscillation frequency of enharmonic oscillator, it will become equal, it will be at the equilibrium position with zero vibrational energy. Thus, we can define this omega E, we can define this omega E as a हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम. इस ओमेगा ई को हम हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम, हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, हम इसको कह सकते हैं frequency of enharmonic system, enharmonic system. So what is this omega e bar is? It is a hypothetical equilibrium oscillation frequency of any enharmonic system. Enharmonic system, which means that is the frequency for infinitely small vibration about the equilibrium bond. So अराउंड द इक्विलिब्रियम, जब आपका इक्विलिब्रियम बॉन्ड के आसपास थोड़ा सा चेंज होंगे बॉन्ड लेड में, तो that will be your oscillation frequency of any enharmonic oscillator, and this omega e will give you that hypothetical I can say oscillation frequency. Now let's move forward and let's see some more important point about our enharmonic oscillator. But for any vibrational state where your mu is positive, the energy is given by the expression, and this is the final expression that for any vibrational state where mu is positive, this omega oscillation will be equal to omega e bar 1 minus mu plus 1 by 2 xe. So this is the energy equation, final energy equation. It can be used for any vibrational state where your mu is positive. So जहां पे भी आपका म्यू पॉजिटिव है, आप इस इक्वेशन को या इस एनर्जी एक्सप्रेशन इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं. सो अगर हम इस इक्वेशन को फिर से देखें, the equation or energy equation, that is E mu is equal to mu plus 1 by 2 omega E bar 1 plus mu plus 1 by 2 xe. That is this equation, similar equation without solving for this omega e. This is the energy equation for any enharmonic oscillator, and if we consider here mu is equal to 0, अगर इस equation में आप mu का 0 put करेंगे, the energy equation will become, ये आपका 0 है तो this will become half of omega e bar 1 minus mu 0 है तो ये आपका this is minus 1 divided by 2 xe centimeter inverse. So this is the 0 point energy equation. So this is the 0 point energy. So this is important, 0 point energy. In case of simple harmonic oscillator, we have seen that the 0 point energy is equal to half of omega oscillation bar. However, in case of enharmonic oscillator, a new term, that is 1 minus 1 by 2 xe are adding, and this is the slight difference between your harmonic oscillator and enharmonic oscillator. So this is how your energy, the equation of the energy changes as you move on from your simple harmonic oscillator towards a real molecules energy equation, that is enharmonic oscillator. And this is the 0 point energy for enharmonic oscillator. So
These two equations are very important equations, that the energy is equal to mu plus 1 by 2 omega E 1 minus mu plus 1 by 2 Xe. And when we put mu is equal to 0, that is the that is the zero energy, the potential is 0, the energy equation becomes 1 by 2 omega E 1 minus 1 by 2 Xe. And this is for enharmonic oscillator. And for harmonic oscillator, the 0 point energy is half of omega oscillation. That means that the molecule vibration, that the molecule is never at rest. It is vibrating with some energy even at rest with this amount of energy that is equal to 1 by 2 omega E 1 minus 1 by 2 Xe. And this second term is adding in case of enharmonic oscillator. So this is all about for today, and this is the introductory part of our enharmonic oscillator. What is an enharmonic oscillator, how real molecule behaves, and what are the energy equation and 0 point energy equation for a real molecule that is an enharmonic oscillator. Okay, so that's all for today. Thank you.